वेलकम बैक गाइस। सो जो आज की वीडियो है इट इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ द होल सीरीज एंड विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आज की वीडियो में हम थोड़ा डायलॉग फ्लो के बारे में देखेंगे एंड दूसरी चीज़ ये देखेंगे दैट हाउ वी गोना कनेक्ट आवर बैक एंड विद द डायलॉग फ्लो एंड इंटीग्रेट विद द टेलीग्राम। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी आर गोना सी अबाउट द डायलॉग फ्लो। ऑलराइट। सो बेसिकली डायलॉग फ्लो क्या है? डायलॉग फ्लो एक service, or you can say it is a product that brought by Google. Alright, इसमें क्या है? Already NLP based models हैं, तो हमको इसमें कोई भी एजेंट या फिर कोई भी मॉडल स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता. If you don't know NLP, it is okay because we don't have to create an model from the scratch. We just have to train our model on our intent. Alright. So as you can see that is my agent right now. That's called Stark. So you can create a new agent here. If you are new to Dialogflow, you can see there is a option of a new agent. So after when you are successfully created the agent, there will be an interface where you have two intents. Alright. यहाँ पे क्या होंगे? दो intents होंगे तुम्हारे पास. First default fallback intent and default welcome intent. Alright. Default welcome intent basically जब तुम किसी को हाई कहोगे, मतलब when you say hi to a chatbot, so ये तुमको response देगा, ठीक है ना? Right. A user expression means a user कैसे एक chatbot को hi बोल सकता है, right? Hello, hi, hey there, and we have some response there, right? Action parameters, that is our response. Hey, how are you doing? How can I help you? That is a response of this intent. So intent basically क्या होता है कि हम intent ऐसे समझ सकते हैं कि एक user किसी भी मशीन से जो काम करवाना चाहता है वो चीज़ एक intent हो जाती है, right? So that is an intent. When you are done with this welcome intent, you can just click on the save and it is done. Now coming to the main part that we are going to see here, and that is currency converter. uh, Currency converter, right? Currency converter intent. So basically what we are doing here, that is हमने यहाँ पे कुछ expressions दिए कि एक यूजर कैसे चैटबॉट से अपना काम करवाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, राइट? जैसे would you please convert 100 ruble to USD, or please convert 200 pounds to rupees. Alright, so you have to train your model on these questions, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यूज करे हैं एंड यू कैन यूज अदर क्वेश्चंस, राइट? ये जरूरी नहीं है कि यू आर मेकिंग द करेंसी कन्वर्टर, राइट? सो बट फॉर द प्रोजेक्ट दैट इज अ क्वेश्चन दैट अ यूजर कैन आस्क. इसके बाद रिस्पॉन्स ना, जब तक मेरा बैकएंड डायलॉगफ्लो के साथ कनेक्ट नहीं होगा ये सिर्फ एक ही रिप्लाई देगा, सर्वर डाउन, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम. ऑलराइट, if I say that see, there is a response, server down, try again after some time. Okay, now in the previous video uh, there is a three things that we get from the JSON structure, that is our the source currency, target, and the amount. If you want to see that JSON structure, what you can do here, that is you can just click here diagnostic information and copy Raw's response. After you can just JSON viewer and you can go there
Now you have to just paste it and view, right? So as you can see that we have a query result. query result के हमारे पास अंदर पैरामीटर्स थे, राइट? तो पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास क्या थे? सोर्स, करेंसी, टारगेट एंड टारगेट अमाउंट. That we get from the JSON structure, or you can say JSON that we get from the dialog. Okay. Now if we see the structure of it here, now query result, the query result के अंदर हमारे पैरामीटर्स थे. पैरामीटर्स के हमारे पास अंदर यूनिट करेंसी आ गई एंड करेंसी नेम आ गया एंड that will be currency and amount. Alright. Now the thing is, जो हमारे पास 100 है, that is our amount. Currency, it is a source currency and currency name will be the target currency. Alright, and this is how you can get that information. Alright, afterwards हम क्या देखेंगे? यहाँ पे ट्रेन हो गया. Now you are done with it. Afterward you have to do fulfillment. You have to come fulfillment. Fulfillment क्या होगा कि हम यहाँ पे अपने बैकएंड को Dialogflow के साथ कनेक्ट करेंगे. And how we gonna connect it? With the help of Nagrok. Alright, I already downloaded it. I will provide you the link of the Nagrok in the description box so you can download it from there. Alright, so now जब you are already have downloaded the Nagrok, so afterwards what you have to do, you have to just go to the CMD and type Nagrok. कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा. Now what you have to do is that you have to go to your backend. अब ना जब आप अपने बैकएंड को रन करोगे then you will get a port number that is 5000. So now you have to go to the CMD once again. Now you have to type nagrok http 5000. Sorry. दो मिनट and गड़बड़ आ रही है. That is
Now आपको एक सर्वर मिलेगा ये. Now you have to copy it and go to the Dialogflow in the fulfillment section, and you have to just paste it there, and you have to save it. Now your backend is connected with the Dialogflow. Yeah, so you getting the answer. Afterwards हमको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है विद अवर टेलीग्राम. सो यहाँ पे दो तरीके हैं अपने चैटबॉट को इंटीग्रेट करने के. फर्स्ट यू कैन शो इट टू योर वेब डेमो. You have a link of web demo there. Now this is your website of the chatbot. And now if you want to integrate with your Telegram, so you have to go to Telegram and search bot father. अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपना नाम देना पड़ेगा अपने चैटबॉट का. Once you have successfully gave your chatbot name or it is available, you will get a token. Alright, so you have to copy this token and go to the Dialogflow, click on the Telegram, and you have to paste the token here. Alright, now your Telegram is connect with your chatbot. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म होता है ना. एक और मेन चीज कि जो चैटबॉट होते हैं ये स्मॉल टॉक में भी थोड़े अच्छे रहते हैं. ऑलराइट, so if you want to train your chatbot into a small talk, so there is a small talk section. You can go right there and you can just train your models on this small talk, right? जैसे कि about agent वाला क्या ये है, तो स्मॉल टॉक है. तो यहाँ पे एजेंट के बारे में तुम कोई भी चीज पूछ सकते हो, उसका रिस्पांस दे सकते हो कि तुम्हारा एजेंट किस तरीके से उसका रिस्पांस करेगा, राइट? जैसे कि अगर कोई पूछता है हु आर यू, देन इट विल जस्ट response, I'm your assistant. How old are you? Sir, I am a program. You are knowing so you do. These are the response. Alright. जो चैटबॉट रिस्पॉन्स करेगा यूजर ये क्वेश्चन पूछने पे. सो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रोजेक्ट पूरा खत्म होता है. एंड एज फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द machine learning, and we also do some projects in the supervised reinforcement machine learning, and also try to build some projects on them. And also in the machine learning I will try to start a course on the computer vision also. So yeah, we will see. And the videos mostly will upload on the Saturday and Sunday. All right, so thank you once again for watching this video.